Hello, my dear wonderful students. So, welcome to today's session. This is Achal, your mentor, and we are taking up SST for class 6, right? And we are on to History, Chapter 8, Life in Towns and Villages, right? So, ancient times में towns और villages की किस type की life हुआ करती थी, that we are going to see in this chapter. So, we'll be learning about urbanization, right? We'll be learning urbanization होती क्या है, political and administrative centers, trade centers, right, जो business के जो centers थे, religious centers, then construction of towns, growth of trade, and we'll also be learning about Sangam literature. So children, due to availability of scripts and other artifacts, it is easier to understand the life in villages and towns of the ages closer to the present. Means आज से अगर हम बहुत ज़्यादा पहले की बात ना करें, closer to the present हम history की बात करते हैं, then due to availability of scripts and other artifacts, it is easier to understand कि उस टाइम पे लाइफ इन विलेजेस और टाउन्स कैसी हुआ करती थी, राइट. रिटन जो हमारे पास एविडेंसेस हैं एंड जो आर्टिफैक्ट्स यानी पॉटरी हो गई और जो सामान हमें उस टाइम का मिलता है ड्यूरिंग एक्सकेवेशंस, उन सब की स्टडी से वी गेट अ गुड आइडिया अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल इन टाउन्स एंड विलेजेस एट दैट टाइम, राइट. So the Indus Valley civilization, if we talk about that, it was an urban civilization which is proved by the excavations of well laid out towns and cities. उसके excavation से जो city है जो देखी गई हैं towns and cities, they were very well planned, right. उनके architects काफ़ी अच्छे थे. So that means Indus Valley civilization में urbanization थी. There were urban cities and towns. However, with the decline of Indus Valley civilization and the advent means arrival of Aryans, that is during the Vedic period in 1500 and BC, there was a change in civilization, right. तो urbanization जो Indus Valley civilization के टाइम पे थी, आर्यंस के आने के साथ साथ वो खत्म हो गई कहीं ना कहीं और विलेज लाइफ आ गई. During the age of Mahajanpads, right, towns started emerging, and further when Mauryans came into power, many urban cities grew up, right. So वापस से जब महाजनपद बने after Vedic period, right, और Mauryan empire के time पे फिर से urbanization start हुई, फिर से cities and towns develop होने start हुए. So let's talk about urbanization in detail. The Aryans, they were basically village based, right. वो village based उनका जो culture था वो उस type का था. They settled to practice agriculture. वो agriculture के लिए वो ज़्यादा main focus था उनका. They settled for doing that. The gradual agriculture intensification resulted in pressure on land, right. So जिस तरीके से agriculture में increase हो रहा था, right, intensify हो रहा था, development हो रहे थे, सो जो लैंड था, राइट, लोग लैंड के पीछे बहुत पागल थे. देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन लैंड. आर्यंस मेड टूल्स with the help of iron which helped in cutting down trees with ease, and the use of iron began in the Indian subcontinent around 3000 years ago, right. So आर्यंस ने आयरन का यूज़ बहुत स्टार्ट किया और उससे टूल्स बनाए जिसकी मदद से forest and all they could easily cut and use that land for either their settlements or for farming. The dependence on agriculture made them search for different occupations such as carpentry, blacksmithy, pottery, weaving and hunting, right. They found that they were very majorly dependent on agriculture. So उन्होंने क्या किया, they started looking out for other options of occupations, right. Like carpentry, उन्होंने carpentry start की. Blacksmithy means people who work with iron and steel, right. Then pottery, earthenware बनाए, weaving, hunting. So these all other occupations emerged. In the western parts of the Gangetic Plains, the painted grey-ware culture dominated, right. So जो Gangetic Plains, right, जो गंगा के अराउंड जो plains थे उसके western part में the painted grey-ware क्या होता है, earthenware ही होता है, but इट इज़ कुकड एट इसको जो बेक किया जाता है वो काफ़ी लो टेम्परेचर्स पर किया जाता है, राइट. कोई एडवांस्ड फायरिंग टेक्निक्स यूज़ नहीं की जाती, इसकी वजह से इसका ग्रे कलर आता है अर्दनवेयर का. सो इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द गैंगेटिक प्लेन्स द पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर डोमिनेटेड. उस टाइम पे ज़्यादा ग्रे वेयर यूज़ किया जाता था.
while the black and red ware culture developed in the central and eastern parts of the plain. Central और eastern parts में black ware और red ware यूज किया जाता था, right? red ware क्या होता है? इसके जो क्ले होती है जिससे ये अर्दनवेयर बनाया जाता है, इसके अंदर आयरन ऑक्साइड की मात्रा होती है. इसकी वजह से इसको जब बेक किया जाता है एट लो टू मॉडरेट टेम्परेचर्स तो ये रेड कलर का हो जाता है. एंड ब्लैकवेयर अगेन उसके अंदर भी क्ले में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कि जब उन्हें फायर जो फायरिंग टेक्निक उस पर यूज़ की जाती है तो वो ब्लैक हो जाते हैं. सो वेस्टर्न पार्ट्स में ग्रे वेयर प्रिवलेंट था एंड इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द प्लेन्स blackware and redware dominated. This period around 400 BC saw the growth of cities, increase in trade and commerce and growth of crafts. So इस period में around 400 BC बहुत development देखी गई, right? Cities develop हुई, trade and commerce काफ़ी flourish किया and there was growth in crafts also. Hence, historians refer to this age as second urbanization, right? पहले किस टाइम पे थी urbanization? इंडस वैली के टाइम पे. Then during when the Aryans came, urbanization declined and then again urbanization started at this period. So it is called second urbanization. Clear? So the agricultural production led to increase in food supply. जो एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा फ्लरिश किया तो उनकी जो फूड सप्लाई थी वो सरप्लस में होने लगी. So the Nandas built a canal at Kalinga. The Chola king Karikela provided irrigation facilities in the river Kaveri. So जो नंदा डायनेस्टी के जो रूलर्स थे नंदास, उन्होंने केनाल्स बनाए. केनाल्स क्या होते हैं? दे आर आर्टिफिशियल और मैन मेड वाटरवेज यू कैन से, जो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करते हैं, राइट? और मे बी उसको ट्रेड एंड कॉमर्स को फ्लरिश करने के लिए ये जो वाटरवेज आर्टिफिशियल वाटरवेज बनाए जाते हैं उनको केनाल्स कहा जाता है, राइट? दे आर ऑल्सो मेड फॉर इरीगेशन पर्पसेज. So the Nandas built a canal at Kalinga and the Chola king Karikela, what he did? He provided irrigation facilities in the Kaveri river. Excess food was traded for other goods which led to the establishment of new trade centers which later grew into big cities and towns, right? So जो excess food supply जो थी, excess food production जो था उसके साथ क्या किया जाता था? उससे goods की trading की जाती थी, right? They were traded for other goods. उनके बदले में दूसरे गुड्स की परचेज किए जाते थे विच लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू ट्रेड सेंटर्स. सो इसकी वजह से न्यू ट्रेड सेंटर्स एस्टैब्लिश हुए विच लेटर ग्रू इनटू बिग सिटीज एंड टाउन्स, राइट? जहाँ पर ट्रेड हुआ करता था, ट्रेड फ्लरिश करता था, उसके अराउंड ही लोग सेटल हो जाया करते थे. सो दैट डेवलप्ड इनटू cities and towns. Several towns like Patliputra, Mathura, Kashi, Kosala and Ujjain, they grew faster. In the south, towns like Thanjavur, Arikamedu, Madurai, Puhar and Mamallapuram also grew during this period, right? Now let's talk about political and administrative centers at that time, right? These are places, these are locations जहाँ से government function करती हैं, right? पूरे जो administration है वो देखा जाता है. So in this phase, all cities and towns were not uniform. सब एक से नहीं थे. Some cities became political and administrative centers. Some of the urban centers that grew as political centers of administration were Hastinapur, Rajgriha, that is Magad, Kosambi, that was Vatsa, and Shravasti, that was Kosala. So these cities grew as capitals and powerful kingdoms, right? In places पर पॉलिटिकल सेंटर्स थे, ये जो प्लेसेस थे जहाँ से बाकी जगहों को गवर्न किया जाता था, उन जगहों की एडमिनिस्ट्रेशन को देखा जाता था. सो दीज सिटीज दे ग्रू एज कैपिटल्स एंड दे बिकेम पावरफुल किंगडम्स बिकॉज दे वर द सेंटर्स फॉर पॉलिटिक्स. द साउथ इंडियन सिटीज लाइक कावेरी पट्टनम, दैट इज चोलास, एंड मदुराई, दैट इज पांड्यास, ग्रू एज कैपिटल्स, राइट? सो सिटीज जहाँ पे चोलास थे कावेरी पट्टनम and Pandyas Madurai mein, right? So these cities also grew as capitals and were quite powerful. Now let's talk about their trade centers. So some towns were centers of trade. These urban cities were connected to villages and helped the villagers to exchange their produce, right? So ये जो urban cities थी जहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट्स हो चुके थे, काफ़ी लोग रहते थे. सो दे वर कनेक्टेड टू विलेजेस, जहाँ से जो विलेजर्स थे वो अपने प्रोड्यूस को
विलेजेस में सेल कर पाते थे. सो दैट हेल्प द विलेजर्स टू एक्सचेंज देयर प्रोड्यूस. दे कुड एक्सचेंज देयर प्रोड्यूस, देयर गुड्स, देयर फूड सप्लाईज टू पीपल with people of urban cities. Centers like Ujjain, Nasik and Kashi developed as urban centers, and certain towns grew around ports. Ports जो होते थे यानी जो सी रूट्स की जो पोर्ट्स होते थे उसके अराउंड भी, क्योंकि सी रूट है जहाँ से वहाँ से भी ट्रेड कार्य करता था. सो उसके अराउंड भी जो थे टाउन्स जो थे वो डेवलप होने लगे. भरूच वॉज अ मेजर port city. Bharuch जो थी it was a major port city, and on the western coast were the ports of, western coast पर कौन से ports थे? So Para, Kalyan and Mussoorie, that were important centers of trade with the Roman Empire. So Romans के साथ trade किया जाता था through these ports, right? So ये port cities भी develop होने लगी. Tamra-Lipti on the mouth of Ganga was another main port of the eastern coast. So Ganga river का जो mouth था जहाँ से वो originate होती थी, there was a port known as Tamra-Lipti. That was also a main port on the eastern coast. So other places like Arikamedu, Korkai, Azagarkulam and Puhar also grew during this period, right? So these were all the trade centers. Now let's talk about religious centers. Some centers they concentrated on the spread of religion. जिनका main purpose था religion को spread करना, right? So like Buddhism, Jainism and Hinduism, इसके भी कुछ centers थे जहाँ से इन religions को spread किया जाता था. So Nagarjunakonda and Amravati were important religious centers of those times, and Vaishali, Ujjain, Kasi, Madurai and Mathura were centers of हिंदू रिलीजन. सो हिंदू रिलीजन यहाँ से स्प्रेड किया जाता था. वैशाली, उज्जैन, काशी, मदुराई एंड मथुरा. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन्स. सो द टाउन्स वर बिल्ट ऑफ मड ब्रिक्स एंड पैलेसेस वर मेड ऑफ फाइनली कार्व्ड वुड. सो जो टाउन्स थे वो मिट्टी की ईंटों, मिट्टी से बनी हुई ईंटें जो होती हैं उनसे बने हुए थे. और जो पैलेसेस थे, जो महल थे किंग्स के, they were made of finely carved wood. उसमें जो wood थी that was very finely carved, उसमें carvings थी वो यूज़ की गई थी. Urban cities had drains, ring wells and soakage pits to dispose of sewage, right? So जो urban cities थी उनमें अच्छे drainage system थे. Then there were ring wells. Ring wells क्या होते हैं? Earthen rings होते हैं जो एक के ऊपर एक लगाए जाते हैं, and they act as drainage, नालियों की तरह काम करते हैं. And there were soakage pits also, जो क्या करते हैं, जो ये पानी है उसको सोक करते हैं, अंडरग्राउंड उसको सोक करने में हेल्प करते हैं. So the city was enclosed by a moat or a rampart which acted as protection against floods. Now what is a moat? जो ये किंगडम्स थे, राइट, जो इनके जो सिटीज़ थे, इनके अराउंड सिटीज़ जो थी, मोट क्या होता है, एक गड्ढा सा खोदा जाता है, एक पिट खोदा जाता है उसके चारों तरफ, और उसी की मिट्टी से रैम्पार्ट बनाया जाता है. रैम्पार्ट क्या होता है, हाई वॉल्स बनाई जाती हैं जिस पे ऊपर चलने का भी रास्ता होता है. सो ये जो मोट्स होते हैं, जो गड्ढे खुद जाते हैं, दे आर नॉट ऑलवेज फिल्ड विद वाटर, राइट. सो इससे क्या होता है, फ्लड्स आते हैं तो सिटीज़ प्रोटेक्टेड रहते हैं, राइट. सो वो वाटर फ्लड्स का जो है वो भी उसमें आ जाता है. एंड दीज रैम्पार्ट्स, दैट इज जो हाई वॉल्स हैं, दे ऑल्सो कीप द सिटीज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम दी फ्लड्स. इन साउथ the landowners were called Vellalars. So what do we call them? Vellalars in south. And farmers were called Uzhavar. And landless people, जिनके पास कोई land नहीं होता था अपना, they were called Kadaisiar, right? They were called Kadaisiar. And ये तो साउथ की बात थी. और साउथ, अगर हम नॉर्थ की बात करें, तो जो विलेज का हेडमैन था, जो हेड था उनका, he was called ग्राम भोजक, right? He was called ग्राम भोजका. And small landowners were called गृहपति. जिनके पास अपने लैंड्स थे उनको गृहपतिस कहा जाता था. And जिनके पास लैंड नहीं होता था, लैंडलेस होते थे, they were called दासा कर्माकरास. They were known as दासा कर्माकरास. Clear? So मथुरा की बात करते हैं. इट वॉज द सेकेंड कैपिटल ऑफ कुशानास. कुशाना जो पीरियड था, कुशाना एम्पायर, उसकी बात की जाए तो उसकी सेकेंड कैपिटल थी मथुरा. एंड इट वॉज अ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर. वो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था मथुरा.
It was an important town of this age because a number of activities. क्यों important था मथुरा उस टाइम पे? Many trade sites passed through it which made it highly prosperous, right? बहुत सारे trades का वहाँ पर center था. It was a religious center also, right? वहाँ पर religious center भी था वो एक, and had many temples of Lord Krishna and other gods and a number of monasteries. तो वहाँ पे बहुत सारे temples थे Lord Krishna के और बाकी gods के, and also वहाँ पर Buddhist monasteries भी थी काफ़ी. So it was a religious center. It was a center of art and craft too. So मथुरा में art and craft का भी center था, and the Mathura School of Art was known for sculptures of Buddha. So मथुरा School of Art था वो काफ़ी famous था for the sculptures of Buddha. Lord Buddha के sculptures के लिए काफ़ी famous था. Now during the same time, Rome, which is one of the oldest cities developed in Europe, was also known for its superior architecture. So Rome also developed during this period only, and it was also known for its superior, for its great architecture. Now let's talk about coins at that time. So the earliest coins were punch marked coins, right? उन पर कुछ inscriptions नहीं होते थे. They were not of any particular shape. मेटल के कुछ pieces होते थे जिनको flat किया जाता था, right? और उनके ऊपर punch किए जाते थे images. So वो coins use किए जाते थे, punch marked coins. Silver coins were used more often. वो silver के होते थे. The coins did not have any inscriptions on them. उनके ऊपर कुछ भी written records नहीं हुआ करते थे. So वो कुछ rectangle shape के होते थे, कुछ square shape के होते थे, कुछ rounded होते थे, right? So they were not of any fixed shape also. Now craftsmanship. People specialized in crafts like jewelry making, weaving and pottery. So लोग बहुत skilled थे in weaving, pottery and in jewelry making. Most of the craftsmen lived in the villages. However, some of them concentrated in the areas where raw materials were available. So right, ज़्यादातर जो ये craftsmen थे ये villages में रहते थे, but कोई एरियाज़ होते थे जहाँ पर उनके आर्ट एंड क्राफ्ट के रॉ मटेरियल्स अवेलेबल होते थे, तो बहुत सारे लोग उसके इर्द गिर्द उसके आसपास ही सेटल हो जाया करते थे, विच लेड टू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स विच फर्दर एक्सपैंडेड एज क्राफ्ट सेंटर्स. तो वहाँ पर लोग ज़्यादा सेटल होने लगे, तो वो जो सेंटर्स थे दे केम टू बी नोन एज क्राफ्ट सेंटर्स, वो काफ़ी डेवलप हो गए. द अशोका पिलर कैन बी विजिटेड इन द म्यूजियम. अशोका पिलर को आप म्यूजियम में विजिट कर सकते हैं. एन इन्वर्टेड लोटस फ्लावर, यू सी हियर, दिस इज एन इन्वर्टेड, उल्टा किया हुआ लोटस फ्लावर है, विच फॉर्म्स अ प्लेटफॉर्म. वो एज अ प्लेटफॉर्म एक्ट करता है जिसके ऊपर हमारा जो है लायन कैपिटल है फॉर दिस पिलर, एंड एट द टॉप आर 4 लायन सिटिंग बैक टू बैक फेसिंग दी 4 डायरेक्शंस, राइट. और इसके टॉप पर, पिलर के टॉप पर हमारा 4 lions हैं. Those lions, they are pointing, they are facing towards the 4 cardinal directions, that is north, south, east and west. Other illustration on the pillar include an elephant, a galloping horse, a bull and a lion separated by intervening spooked chariot wheels, the dharma chakra with 24 spokes, right. So इसका जो ये एरिया है, आप नीचे की तरफ देखें, lions के नीचे वहाँ पर कौन से एनिमल्स हैं? एक एलिफेंट है, राइट. गैलपिंग हॉर्स मीन्स एक गैलप करता हुआ, भागता हुआ हॉर्स की इमेज है. एक बुल है एंड एक लायन है, विच आर सेपरेटेड बाय दीज व्हील्स, जिन्हें धर्म चक्र कहा गया है. और हर व्हील में 24 स्पोक्स हैं, विच रिजेंबल, विच सिग्निफाई द 24 आवर्स ऑफ द डे, राइट. सो दिस इज द अशोका पिलर विच इज ऑन an inverted lotus flower. The 4 lions on the capital symbolize Ashoka's rule over the 4 directions. Ashoka, उसकी empire थी, it covered almost all of India. So उनका जो चारों तरफ, जो चारों direction में जो उनकी empire थी, उसको symbolize करते हैं. ये जो lions हैं, they are facing towards the 4 directions. And the wheels are the symbols of his enlightened rule. जो ये wheels हैं, ये symbolize करते हैं उनका जो rule था, enlightened, जो उनकी knowledge थी, उन्होंने attain किया था. And the 4 animals जो नीचे बने हुए हैं, elephant, bull, horse and lion, they symbolize the 4 adjoining territories of India. India के जो adjoining, उसके जो neighbors हैं, right, 4 territories, उनको symbolize करते हैं ये जो animals हैं चारों, right. So this elephant symbolizes east, right. ये east direction को symbolize करता है. Bull symbolize करता है west को, horse symbolize करता है south को, and lion symbolizes the north. All right.
So these symbolize the 4 adjoining territories of India. Now let's talk about the growth of trade. Trade कैसे flourish किया? Gold, silver, tin, cotton, silk, ivory and perfumes were exported, right? ये सब जो items थी इनका export start हुआ. There were trade links between India and the Roman Empire. So India और Roman Empire के बीच में trade links थे जिनकी मदद से ये जो सारे items हैं इनको export किया जाता था. What were guilds? Guilds, all the merchants and craftsmen formed groups and associations which were named as guilds or श्रेणीज. जितने भी merchants और craftsmen होते थे वो अपने एक ग्रुप्स बना लिया करते थे, राइट, जिनको गिल्ड कहा जाता था. एसोसिएशंस होती थी जिनको गिल्ड कहा जाता था या फिर श्रेणीज कहा जाता था. दे वर हेडेड बाय चीफ कॉल्ड एल्डर. उनके जो हेड थे उनको एल्डर कहा जाता था. श्रेणीज ऑल्सो सर्व्ड एज बैंक्स वेयर मनी वॉज डिपॉजिटेड. तो ये जो गिल्ड्स थे, राइट, ये एज बैंक्स भी एक्ट करते थे जहाँ पर मनी डिपॉजिट की जा सकती थी. एंड रेफरेंस अबाउट श्रेणीज इज फाउंड इन वैदिक लिटरेचर एंड बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, राइट. इसका जो एविडेंस है अबाउट दीज श्रेणीज और गिल्ड्स इट इज फाउंड इन वैदिक लिटरेचर. वैदिक लिटरेचर में भी इसका जिक्र पाया गया है एंड ऑल्सो इन दी बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स. Literary sources such as Jataka tales जो हैं, the Sangam literature, Ashtadhyayi of Panini and the Buddhist Tripitakas, they give details about the ancient Indian cities. इन सब में आपको ancient Indian cities के बारे में काफ़ी knowledge मिलती है. So these are all the literary sources. Now this is the eightfold path that was given by Lord Buddha along with the 4 noble truths. So what do they tell us? Right views, right intentions, right speech, right actions, right livelihood, right efforts, right concentration and right mindfulness. So this is eightfold path जिसको follow करके a person can attain enlightenment or nirvana, right? Now let's talk about Sangam literature. The word Sangam means an assembly. Sangam means assembly. एक साथ जब सब लोग इकट्ठे होते हैं. A Sangam was held at Madurai where a gathering of Tamil poets and scholars was held. तो Sangam means जो meetings होती हैं, gatherings होती हैं जिसमें ये मदुराई में हेल्ड होती थी एंड यहाँ पर जो तमिल पोएट्स थे और जो स्कॉलर्स थे वो सब मिलते थे. These 3 संगम्स वर हेल्ड, राइट. 3 संगम हुए थे उस टाइम पे. The collections of first and second Sangam, they are not available, they are lost. While in the third Sangam, the contribution of the poets was compiled into 8 books called Ittu Thogai, right. जो थर्ड संगम की जो जो वहाँ पे जो मीटिंग में जो डिस्कशंस हुए वो जो थे उसके जो कंट्रीब्यूशन थे पोएट्स के उस टाइम पे उन सबको कंपाइल किया गया है इनटू 8 बुक्स जिनको इट्टू थोगई कहा गया है. The book gives information about the Sangam period. उस टाइप की information आपको उन books में 8 books में मिल जाती है, right? So let's know this, children. Sangam literature was composed around 2300 years ago or around 300 BCE. उस टाइम पे ये कंपोज की गई थी. The name Sangam is said to have been originated from the southern version of Sanskrit word Sangh, right? Which means association of the people. So ये जो word संगम है ये संस्कृत word संघ से originate किया है जिसका मतलब होता है association. लोग मिलकर जब काम करते हैं associate होकर, so that is known as संघ और संगम. The Tamil assembly of poets flourished under the Pandya rulers of the south and their literary works throw light on the life of people during that period. So उनकी जो literature थी उन्होंने जो literary works किए हैं उन poets ने मिलके उस सब से हमें उस टाइम के लोगों की life के बारे में बहुत कुछ information मिलती है, right? So let's take a quick review of the chapter. Discovery of iron brought about a change in the field of agriculture. We know that iron tools like axes and plowshare increased agriculture production. Iron tools जो थे उनकी वजह से agricultural implements जो बनाए गए, right, उनकी वजह से agriculture production में काफ़ी increase हुआ. 3 different kinds of people inhabited the villages of South and North India. Firstly, there were landowners जो land के मालिक हुआ करते थे. Then there were ordinary plowmen जो उसको खेत को prepare किया करते थे for the farming.
and landless laborers and slaves. And then there were people who did not possess any land, उनके पास अपना कोई लैंड नहीं था, और वो स्लेव्स जो होते थे, यही 3 टाइप के लोग हुआ करते थे इन द विलेजेस ऑफ साउथ एंड नॉर्थ. पॉपुलर ऑक्यूपेशंस कौन कौन सी थी? इट वाज मेटल वर्किंग, देन पॉटरी मेकिंग, वीविंग एंड डाइंग. डाइंग मीन्स कलर करना, किसी चीज़ को रंग करना. There were flourishing trade between Tamil Nadu, that is during the Pandyas time, and Rome. And growth of cities and towns, especially Mathura, was due to its strategic position. उसकी जो position थी वो बहुत favorable थी, उसकी वजह से मथुरा जो है उस time पे it grew very nicely. It was a good trade center, right? Now let's you people can go through this glossary, children, and now let's begin with the exercises. First one is darken the circle of correct option in OMR sheet. You please do that yourselves. We'll be talking about the answers here. First one, village headman was called. Village के headman को क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक. Right. Number 2, in northern part of India, large land owners were known as. So जो land owners थे उनको क्या कहा जाता था? गृहपति. Which of these was not a religious town? इन चारों में से कौन सा टाउन है जो religious center नहीं था? मथुरा, वाराणसी, आगरा और उज्जैन. Yes, it was आगरा. श्रेणीज, जो guilds थे, they were an association of traders, right? क्राफ्ट्समैन जो थे उन सब के ये श्रेणीज थी, एसोसिएशंस थी. Number 5, Arikamedu was a small settlement on the coast of Tamil Nadu. Clear? Right? Let's move to the next question. Fill in the blanks. The Tamil poems compiled in 8 books were called, क्या कहा जाता था उन बुक्स को? They were called Sangam, right? In South India, land owners were called, क्या कहा जाता था South India में land owners को? They were known as Vellalars. In North India, the village headman को क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक. Now dash was written by Panini. Panini ने कौन सी बुक लिखी थी? अष्टध्यायी. So number 4, dash was written by Panini. So Panini ने कौन सी बुक लिखी थी? अष्टध्यायी. Right. Number 5, dash was the second capital of Kushanas. Kushanas की second capital क्या थी? मथुरा. Right? मथुरा. And dash was a major port city. It was Bharuch. Bharuch was the major port city. Cities that were built around the ports. Right? Now let's come to true and false. Dasa Karmakars were the landless people. Yes, they were. True. Number 2, people were allowed to occupy vacant land just on their own will. No, it was not allowed. False. Number 3, the king used to rule with the help of governors. Yes, kings की help किया करते थे governors. True. Number 4, Shrenis. They acted like a bank. Yes, people could deposit their money with them. True. The excavations at Arikamedu reveal the influence of Romans and French. Yes, it does. True. Clear till here? Right? Number 6, punch-marked coins were made of gold. क्या वो gold के बने होते थे? No, they were majorly made of silver. So this is false. Number 7, Mathura was a Roman trading settlement. No, it was not. False. Clear? Now these are detailed questions, children. Please attempt them yourself. You can easily go through the chapter again. We have gone through every aspect. Please complete this. So that was all for this chapter. I hope you have a good understanding of your, at that period of time.
So I'll see you in the next chapter. Till then, you all stay blessed and have a great day. Bye, kids.